Namaste. Welcome back to my YouTube channel eEducator. Okay, in this video we'll discuss about chapter number 18, standard 9, subject social science. As you know that we discussed the textbook exercise. Here in this video we also discuss a textbook exercise, chapter number 18, wildlife. Chapter 18, wildlife of standard 9. So still if you have not subscribed our channel, subscribe and share with your friends. Other chapters videos are already uploaded. You can check the playlist of our channel as well. You can also check the video description box में जाइए, यहाँ पर आपको दूसरे चैप्टर के वीडियो के लिंक मिल जाएंगे. जो 2-3 चैप्टर बाकी है वो जल्दी ही अपलोड हो जाएंगे. Okay, let's start discussion. Before starting the lessons, you make sure that you write the answers point wise and your handwriting must be neat, clean, and you make sure that okay आपके जो handwriting है अच्छे है और आप जितने भी आंसर लिख रहे हैं वो point wise आंसर लिखेंगे. Even you follow the same methods to write the answers in the exams. एग्जाम के अंदर भी आप आंसर पैराग्राफ वाइज नहीं लिखेंगे, उसको आप आंसर पॉइंट वाइज ही लिखेंगे. ओके, आपको पॉइंट वाइज ही आंसर लिखना है सोशल साइंस के अंदर. वो 2 मार्क्स का है या 3 मार्क्स का है या 4 मार्क्स का है. ओके, लेट्स स्टार्ट द डिस्कशंस ऑफ दिस एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. व्हाट इज देयर इन दैट क्वेश्चन? गिव अ लिस्ट ऑफ जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ इंडिया. जियोग्राफिक रीजन्स ऑफ इंडिया. सो इंडिया का जो जियोग्राफिक रीजन है वो उसका लिस्ट आपको यहाँ पर लिखना है. सो इंडियन जियोग्राफिकल रीजन जो देखा जाए कि वाइल्ड लाइफ रीजन है, इंडिया के जो वाइल्ड लाइफ रीजन बना है कि द वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू द 9 डिफरेंट जोन. इंडिया के जो वाइल्ड लाइफ है वो 9 अलग अलग जोन के अंदर उसको डिवाइड किया हुआ है. उसके नेम आपको लिखने हैं यहाँ पर. ओके, नंबर 1 हिमालयास. नंबर 1 हिमालयास, वाइल्ड लाइफ विच फाउंड इन हिमालयास. Second number, Ladakh and dry cold area. Third number, forest covered in a lower Himalayas. Fourth number, highlands without a forest cover in upper Himalayas. 1 to 4 और हिमालय का ही पार्ट है सब. Fifth number, northern plain. Sixth number, desert of Rajasthan. Desert of Rajasthan. 7 number, peninsular plateau. 8 number, sea coast, coastal area of India. And last number 9 number is a Nilgiri Hills. So Nilgiri Hills. So this okay, 9 geographical region of India. We found the 9 different zone of wildlife of India. Now number second, wildlife is endangered today. Explain this statement here. We need to explain the why the wildlife is in danger today. So we know that while going through the past, we see the past of India in the wildlife. It become evident that there is a danger to the existence of a wildlife since the last few decades. So पहले के आपसे थोड़े टाइम पहले की बात करें और आज की बात करें तो आपको पता चलता है कि आज जो वाइल्ड लाइफ है दे आर फाइटिंग फॉर सर्वाइव. So there is a danger to survive for the wildlife. So a question mark has been put against the existence of entire wildlife due to the human greed and development of a recent time. Look at the greediness of a human being and recent time the development which was taken here, development in terms of expansion of a city, expansion of a road, highway, railways, different types of projects, minings. So that reduce a forested area, and once forest reduce, the wildlife is also become in a danger. So wildlife lost their natural habits due to the continuous decreasing, continuously forest areas as decreasing forest areas because of expansion of agriculture, mining. Okay, this reduce of forest area, and so once the forest area reduce, these are the place where the wild animals live. So wild animal कहाँ पर रहते हैं? forest के अंदर रहते हैं. So they are losing their habitats. Now huntings were illegal hunting of animal carried out to get a skin, meat, teeth. Okay, hunting carried out, hunting यहाँ पर ये कॉमन नहीं आएगा यहाँ पर. hunting carried out to get a skin, meat, teeth, hair, bones is a big problem. So what hunting is carried out to take the parts of and body parts of animals. Because of that wildlife is in danger due to the heavy grazing by domestic animals. So because of a heavy grazing, बहुत ज़्यादा intense grazing करवाया जाता है, तो domestic animal है, forest का outskirt area के अंदर जो भी
डोमेस्टिक एनिमल रखते हैं वो लोग फॉरेस्ट के अंदर जाकर गेजिंग ग्रेजिंग करवाते हैं, घास चारा उसको खिलाते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि जो ग्रास एरिया है वो कम हो जाता है, ग्रास एरिया कम हो जाता है, उसकी इफेक्ट कहाँ पर होती है, हर्बीवोरस एनिमल पर, उसकी इफेक्ट कहाँ पर होती है, हर्बीवोरस एनिमल। तो हर्बीवोरस एनिमल कम होंगे तो उसके ऊपर जो डिपेंडेंट है कार्निवोरस एनिमल वो भी कम होने वाला है, सो इट विल डिप्राइव द कार्निवोरस टू गेटिंग देयर फूड। सो कार्निवोरस एनिमल को भी डिफिकल्टीज हो रही सर्वाइव होने के लिए बिकॉज ऑफ हर्बीवोरस, हर्बीवोरस को खाने, कार्निवोरस हर्बीवोरस को खाते हैं, हर्बीवोरस को ग्रास चाहिए, ग्रास नहीं होगा तो हर्बीवोरस नहीं होगा, हर्बीवोरस नहीं तो कार्निवोरस नहीं रहेगा, so that carnivorous get a difficulty to take the food. So carnivorous reach human settlements in search of foods and attack on a domestic animal. So carnivorous search okay in the human settlement के अंदर आ जाते हैं and search of food और जाके डोमेस्टिक एनिमल के ऊपर अटैक करते हैं वो और okay then so the conflict arises between wild animals and humans. So when these animals who enter into the human settlement, so the conflict किसके बीच में फाइट होती है, ह्यूमन और एनिमल के बीच में, इन कॉन्फ्लिक्ट लीड्स द डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड। ज्यादातर इसके अंदर क्या होता है कि वाइल्ड एनिमल की एलिफेंट को डेथ होती है, उसको इंजरीज होती है, हैंस इट कैन बी सेड दैट दैट इज अ डेंजर ऑन अ वाइल्ड लाइफ। Okay. Third number, give brief information about the different projects for wildlife protection. So different project, various project has been followed by the government to protect the wildlife. Look at wildlife protection project are as follows. Number one, Project Tiger. So Project Tiger that was launched in 1973 against hunting and decreasing number of tigers, and this was implemented or for 9 reserved areas under which now 48 areas are called. Okay. प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च इन 1973। क्यों कहा गया था कि नंबर ऑफ टाइगर जो थे वो धीरे धीरे बहुत कम हो गए, तो टाइगर को प्रोजेक्ट प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके स्पीशीज को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया 1973 के अंडर थ्रू डिफरेंट एरिया रिजर्व किए, इनिशियली 7 थे, सॉरी 9 थे, उनके बाद अभी 48 एरियाज वो टाइगर रिजर्व के अंदर है। Lion project. So Asiatic lions are now restricted to गिर फॉरेस्ट ऑफ सौराष्ट्र। जो एशियाटिक लायन जो पहले मिडल ईस्टर्न कंट्री के अंदर पाए जाते थे वहां तक थे, अभी वो सिर्फ एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर आपको सिर्फ गुजरात गिर फॉरेस्ट के अंदर ही देखने के लिए मिलते। सो एशियाटिक लायंस आर नाउ restricted in a गिर फॉरेस्ट ऑफ सौराष्ट्र। एट वन स्टेज their number had gone below 100। इस टाइम ऐसा आया था कि जो एशियाटिक लायन थी वो 100 से भी कम हो गए थे। So in 1972, a project was started for the protection of Asiatic lion. The Gir, okay, protect the Asiatic lion started in a Gir, and there are now 523 lions according to their lion census held in 2015 के हिसाब से। ये डेटा जो दिया है 2015 का, उसके बाद भी सेंसस हुए होंगे, उसका यहाँ पर मेंशन नहीं है। 523 लायंस है 2015 के हिसाब से। Now different other projects are also there. Hangul project. Okay, Hangul project was launched for the species of Barasinga deer in Kashmir. ये हंगुल जो हंगुल डियर कैटेगरी का एक आता है, जो वहाँ पर बारासिंगा जिसको बोला जाता है वो कश्मीर के अंदर पाया जाता है, जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया। क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट वाज लॉन्च फॉर द सलाइन वाटर क्रोकोडाइल, सलाइन वाटर का जो क्रोकोडाइल है उसके लिए लॉन्च किया गया। राइनो प्रोजेक्ट for the protection of Indian rhinos, one horn rhinos, okay, Indian rhinos, one horn rhino project, ये RH दूसरी बार हो गया, तो एक ही बार आएगा यहाँ पर। तो वन हॉर्न राइनो स्वैम्पी जो एरिया है आसाम के अंदर वहाँ पर आपको ज़्यादा मिलते हैं, वेस्ट बंगाल के अंदर भी दिखाई देते हैं। स्लो लेपर्ड्स प्रोजेक्ट, सॉरी स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ leopards which found in snow line part of Himalayas. Question 3, answer the following questions in a detail. Number 1, biodiversity of India. You may find this is a long answer. Biodiversity, various animals found in India. We write which animals are found in which region. अलग अलग एनिमल्स जो अलग अलग एरिया के अंदर पाए जाते हैं उसके बारे में आपको पर लिखना है, तो आपको थोड़ा आंसर ये बड़ा लगेगा। Now India has a diversified wildlife relief features, okay, and we have the different types of climate. Because of a diversified relief features and because of a diversified climate, that we have the varieties in a biodiversity. So we have the similar diversities as seen in this wildlife in India. So in the entire world, about 15 lakh species of a wildlife is recorded. We see entire world different species of a wildlife. 15 lakhs of species are recorded.
तो इसमें से इंडिया के अंदर कितनी है? इन इंडिया वी फाउंड 81,251 स्पीसीज आर फाउंड इन एंटायर इंडिया. So this includes reptiles. इसके अंदर क्या include किया? It includes reptiles, mammals, fish, and other insects are included in this. Okay, the biodiversities. Asian, look at now they are mentioned about the various birds, animals, reptiles which found in the part of India. Like Asian elephants in the peninsular rainforest के अंदर ज़्यादातर पाया जाता है साउथ इंडिया के अंदर. वन हॉर्न राइनोज इन स्वैम्पी ब्रह्मपुत्र रिवर के अंदर पाया जाता है. Okay? And snow leopards in higher Himalayas we found. Wild goats and musk deer are found in Kashmir के अंदर पाया जाता है. While buffaloes are seen in the forest area of southern India. Tiger is found in central India and West Bengal. Gudkar in a little desert of Kutch. Flamingo in waterlogged great desert के अंदर पाया जाता है. Great desert of Kutch. Great Indian bustards is found in the grassland area of Bunny grassland of Kutch region. So in the waterlogged area, migratory birds from the cold regions come down in a greater number. So that migratory birds like a Siberian crane, pelican, Tibetan duck, coons, karkara, etc. are found in this waterlogged area. So flying squirrel are seen in the dense forest of a Western Ghats. We found a flying squirrel seen in the dense forest of a Western Ghats. Nicobari dove in Nicobar Islands. We found a Nicobari dove in Nicobar Islands. Even rare species of corals are seen in the Gulf of Kutch. लक्षद्वीप के अंदर रेयर स्पीसीज आपको देखने के लिए मिलती है. स्पीसीज ऑफ कोरल पर आपको देखने के लिए मिलती है. So various types of reptiles include like a king cobra, snakes, pythons, iguana. These are found okay in the various अलग-अलग जो reptiles है वो भी पाए जाते हैं इंडिया के अंदर. इसके अलावा along we found a sea coast. On the other hand, okay, water bodies various species, sea snakes, dolphin, shark, dugong, octopus, and whale etc. are found here. India is in a sixth position among the countries rich in biodiversity. Now number 2, remedies for wildlife conservation. So we need to write the remedies for wildlife conservation. So we shall have to be more dedicated to implement a strong level of provisions for the protection of wildlife. So long-term planning is necessary to conserve and increase a forest area. So long-term planning is required if you want to increase the forest areas and increase okay that wildlife. Now various social NGOs are there. Number of NGOs are working. Okay, NGO S small आएगा यहाँ पर. Okay, NGO S small आएगा यहाँ पर. So I should give us this top priorities and arrange the public awareness program. Non-government organization S small आएगा यहाँ पर, छोटा आएगा. Okay, so the public awareness program should be arranged for the protection of wildlife. These problems should be included in the school syllabus and make the future citizen aware. So as a part of this syllabus आपके टेक्स्ट बुक के अंदर चैप्टर दिया गया है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के बारे में. So before implementing any development project, its probable effects on environment and living organisms should be examined here. Before implementing any development project, कोई भी development project like a railway, roads, अभी forest के अंदर निकालो, multi-purpose project के mining करवा रहे हो तो उसका effect living organism के ऊपर क्या होने वाला है, it should be examined. Then this project should be implemented. Cutting of large trees outside the forest area should be stopped. जो लार्ज जो फॉरेस्ट एरिया के बाहर जो बड़े बड़े ट्रीज है या बड़े बड़े ट्रीज काटना नहीं चाहिए. दीज आर द रेस्टिंग प्लेस ऑफ अ बर्ड. नेस्टिंग के लिए बर्ड उन ट्रीज का यूज करते हैं. नेक्स्ट वन ओके पॉन्ड्स पॉन्ड फार्म्स है. पॉन्ड्स फार्म पॉन्ड्स एंड वेटलैंड एरियाज आर नेसेसरी फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स. माइग्रेटरी बर्ड्स ज्यादातर विंटर के अंदर आते हैं उसके लिए वेटलैंड एरिया चाहिए. For those which are habited near water body should be protected. So wetland area should be protected for the migratory birds. Now in agriculture field, uses and spread of a bioinsecticide should be done instead of a chemical based insecticide. Chemical based insecticide use नहीं करनी चाहिए. Okay, हमें ज़्यादा से ज़्यादा बायो इंसेक्टिसाइड का यूज करना चाहिए.
Now, to manage the forest fire and anticipatory planning should be made for patrolling and safety. फॉरेस्ट फायर के लिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें वी नीड टू ओके मेंटेन द पेट्रोलिंग एंड सेफ्टी के लिए फॉरेस्ट फायर की सेफ्टी के लिए अलग पेट्रोलिंग करना चाहिए और इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट भी हमारे पास होने चाहिए. Efforts should be made to active government sectors to reduce pollution. Steps taken to nurture wildlife. So efforts should be made to activate government sector. So government sector to reduce pollution. पोल्यूशन को कैसे रिड्यूस किया जाए उस हिसाब से हमें काम करना चाहिए और वाइल्ड लाइफ को बचाना चाहिए. This is the short exercise. You can see here. These are the MCQ. Number one is how many geographical regions is India divided? As we have discussed, it was 9. नंबर वन क्वेश्चन के अंदर था हाउ मेनी स्पीसीज इज लिविंग ऑर्गेनिज्म रिकॉर्डेड इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड के अंदर है तो कितना आएगा 15 lakhs. थर्ड नंबर वेयर आर फ्लाइंग स्क्विरल फाउंड. फ्लाइंग स्क्विरल कहां पर पाई जाती है इंडिया के अंदर? वी फाउंड देम इन वेस्टर्न घाट. So first D, second B, and third D. So fourth number, which birds is rarely seen in the mountainous of Vijayanagar Taluka? Vijayanagar, that we found a chilloto, rare birds. Rare species of a coral कहाँ पर पाई जाती है? Okay, we found that is found in Lakshadweep Island. Where are the bustard scenes? Bustard heaviest bird जो grassland के अंदर पाया जाता है. तो D ऑप्शन यहाँ पर आएगा. तो फर्स्ट फोर्थ में बी, फिफ्थ में सी और सिक्स के अंदर डी आंसर. Okay, hope you all like these videos, and so if you still not subscribe the channel and share with your colleagues and friends. Still, if you have any queries, can send me in the comment. Whatever the videos are remaining, it will be uploaded very soon on this channels. बहुत 3-4 चैप्टर बाकी हो, जल्दी से आपको यहाँ पर मिल जाएंगे. Thank you.